So let us start with the structure of a plant cell. See, here I have drawn a very simple structure of a plant cell. This is a very general structure, and let us compare this structure with our school scenario, how our school building or our office or our classroom resembles to a simple plant cell. So here I have drawn two boundaries. One outer boundary is there, which is cell wall, and there is one inner boundary for plant cell, that is called as plasma membrane. Inside this plasma membrane there is a liquid filled material which is called as cytoplasm. This orange part, that this is called as cytoplasm. This I have represented by orange color itself. These small circles that you can see, these are the small parts of the cell, organs, say tiny organs of the cell, which are termed as organelles for a cell. These organelles are capable of doing individual function. And at the center, this black portion, this structure is very dense and situated inside the cell, and this is called as nucleus. This is the control center of the cell, as it controls all the activities inside the cell. And there are 2-3 terms more. Inside this nucleus there is a liquid filled which is called as nucleoplasm. Plasm means liquid and nucleo means related to nucleus. The liquid filled inside the nucleus, that is called as nucleoplasm. What does this nucleoplasm contains? This contains some thread like structure called as chromosomes that contains our genetic information that you have done in your 8th standard also. कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका जीन कोड होता है. एंड न्यूक्लियोलस, एक अंदर एक डेंस सा पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस. और इस पूरे पोर्शन को अंदर जो इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म. अंदर जितना भी ये मटेरियल है, साइटोप्लाज्म हो गई, उसके अंदर ऑर्गेनेलीज आ गए एंड इंक्लूडेड and nucleus included into that. So that all is known as, these three things collectively are known as protoplasm. So whatever content is inside the plasma membrane, that constitutes protoplasm. Whereas cytoplasm is what? Cytoplasm is everything inside the plasma membrane but except nucleus. So next is one more thing, cytosol. Cytosol is what? Cytosol is cytoplasm minus organelles. Cytoplasm is what? Cytoplasm is all this orange material except nucleus, and if you remove all these organelles also, then cytoplasm is termed as cytosol. Sol means a solution, a liquid solution or clear solution which is present inside the cytoplasm. So this is how I have summarized. Protoplasm is constituent is made up of cytoplasm, nucleus and organelle. Nucleus further contains nucleoplasm. So protoplasm has two types of plasma. One is cytoplasm and other is nucleoplasm. Cytoplasm is other than nucleoplasm and nucleoplasm is inside the nucleus, and cytosol is the clear liquid solution, that is cytoplasm itself, but उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है, सारे ऑर्गेनेल्स हमने क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं. नाउ दिस सिचुएशन सीम्स टू बी वेरी टिपिकल. दिस सिचुएशन सीम्स टू बी वेरी confusing sort of. So let us compare this plant cell material, this plant cell structure by our school building. So let us see that. So consider that cell wall, which is the outer boundary of the cell. Consider that as to be building boundary, जो हमारी बिल्कुल स्कूल की स्टार्टिंग से लेकर, छोटी बिल्डिंग की स्टार्टिंग से लेकर बड़ी वाली बिल्डिंग के एंड तक रहती है. दैट इज़ बिल्डिंग बाउंड्री. दैट अलाउज ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पर्सन टू गेट इनटू और गेट आउट ऑफ द स्कूल. Next is plasma membrane. Plasma membrane is it can be considered as junior और senior building, जिसमें हम गेट लगा देते हैं और वो गेट के कारण आप रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर देते हो. तो सेल वॉल जो है वो सभी चीज़ को एंटर करने देता है. जैसे आपकी बिल्डिंग बाउंड्री है, उसमें से समटाइम्स स्ट्रेंजर ऑल्सो गेट इनटू दैट बिल्डिंग. कुछ पासर्स बाय भी चले जाते हैं वहाँ से, जो एक जगह से दूसरी जगह, एक एंड ऑफ द रीजन ट्राइज टू क्रॉस ओवर टू नेक्स्ट रीजन, वो भी होते हैं लोग उसमें.
तो cell wall allows each and every kind of stranger, or building boundary allows each and every kind of stranger to enter into the cell, but this causes security issues. So what we have to do, we have to maintain some security issues. We have to hire some guard, or we have to employ something like to prevent the restriction of entry, to prevent the entry of strangers. So what is being done, that role is being accomplished by plasma membrane. तो plasma membrane क्या करती है, it is a semi permeable membrane. Semi means half, permeable means उसमें से पोर्स के थ्रू मटेरियल का आना, परमिएबल है, आने जाने देती है. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल, आधी चीज़ों को आने देती है, आधी चीज़ों को नहीं आने देती, सेलेक्टिव मटेरियल की एंट्री और एग्जिट रखती है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे किससे कंपेयर किया है, बिल्डिंग्स को, जूनियर और सीनियर बिल्डिंग को. एक और बाउंड्री हो गई स्कूल के अंदर, एक तो मेन बाउंड्री है ही है, एक जूनियर बिल्डिंग या सीनियर बिल्डिंग की बाउंड्री और हो गई, एंड दैट टू विद अ गेट fitted over that boundaries. That gates help the school officials to enter into that buildings, teachers to enter into the buildings, students to enter into the building, or any other related person to enter into that building, but strangers cannot enter into the building. So plasma membrane allows restricted entry. It permits only limited material into the cell. Next is nucleus. Nucleus is the control center of the cell. Like it control all the activities taking place in the cell. Here we can compare the nucleus with headmistress or principal office, from where all the activities are being controlled, or all the instructions, or whatever protocols, whatever rules are given, whatever rules are to be told to you and us, that is being given by headmistress or principal ma'am. Next is organelles. Organelles can be considered as rooms or toilets or water points, etc. छोटी जगह that are included in a building, in a particular building, that can be considered as organelles. Cytoplasm is जो भी blank space है, जैसे एक बिल्डिंग में आप एंटर कर रहे हो तो जितना भी एयर कंटेंट अलॉन्ग विद पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स में जो रूम्स हैं, दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट साइटोप्लाज्म. तो बेसिक जो ये बीच का सारा मटेरियल है, ये आपकी सेल वॉल, आपका मेन बाउंड्री हो गई. नेक्स्ट जूनियर या सीनियर बिल्डिंग की बाउंड्री हो गई. दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफिस और हेडमिस्ट्रेस ऑफिस, कंट्रोल सेंटर, एंड वट एवर इज़ इनसाइड द बिल्डिंग इंक्लूडिंग दिस, दैट ऑल मेक्स अप प्रोटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में क्या है, रूम्स आ गए सारे के सारे, ये ऑर्गेनेलीज कैन बी कंसिडर्ड एज रूम, एंड ब्लैंक स्पेस, ओपन ग्राउंड्स हैं, एयर है अराउंड, दैट ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज साइटोप्लाज्म. तो वो साइटोप्लाज्म हो गया. एंड प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग इनसाइड वन पर्टिकुलर बिल्डिंग, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस बाउंड्री के अंदर, गेट के अंदर जो भी कुछ है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट what is left is cytosol. Cytosol is all the blank space without rooms. यही हमने डिस्कस किया था यहाँ पे. cytosol is what, cytoplasm minus organelles. तो cytoplasm ये ऑरेंज मटेरियल था, ये ऑरेंज पोर्शन था. इसमें से अगर आप ये रूम्स को गायब कर दो, देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद साइटोसोल. सो साइटोसोल इज़ व्हाट, ऑल द ब्लैंक स्पेस विदाउट रूम्स एंड एटसेट्रा. टॉयलेट्स, वॉशरूम्स जो भी हैं वो सबको रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया, साइटोसोल.